the highest amount of AI hiring that is happening actually in Hyderabad, in the world right now. And the foundation was led by this one. Yeah. Not Visakhapatnam is. It's great. You know how much of AI work happens in Google in India? It's crazy. बहुत सारे good teams are sitting out of India. Microsoft has a huge pool of talent sitting in India. I think strategically, उसलिए Anthropic, OpenAI, all these companies are putting their shops in India also because of talent pool density. Because initial talent Silicon Valley में बनता है. उसके बाद वो इंडिया को ही आता है. लास्ट वेव में भी वही हुआ था. So they are seeing that wave possibly to happen right now as well. So hopefully, So there's scope for jobs as well. yeah, scope for in the AI world. original thinkers. Scope for original thinkers. That is exactly what we're talking about. Now, because we're talking about that, there's one other very interesting thing. Okay, हाँ. you know Karpathy? नहीं, मैंने सुना है इसके बारे में बहुत. Tell me about it. Karpathy's job. Andrej Karpathy was the co-founder of OpenAI. Okay. Was the head of AI of Tesla. भाई ट्वीट करता है तो पूरा दुनिया बात करता है उसके बारे में. He is that credible. Okay. As simple as that. Okay. He built something called as a US job market visualizer. ठीक है. इसमें क्या है ना, it's very simple. He mapped all the jobs of US, okay, and basis of the jobs, he said what is the exposure to AI. So total wages exports in the US is $3.7 trillion. Okay. 143 million jobs are exposed to digital AI. Now the thing that is exposed, look at this. Customer service representatives, 9 out of 10 exposure. Red है मतलब गया. Yeah, right? That is the thing. Green है तो good job. For example, construction laborer, no problem. Continue hustling. Janitor, continue your hustle. General maintenance, all good. भाई मेरे लिए तो कोई job Carpenters, बता. all good. Now look at the red ones. Information clerks, financial clerks, receptionists, bookkeeping, material recording, customer service, secretaries and administration. These are one side. Accountants, 8 out of 10. Management analysts, all MBA people get into this, 7 out of 10. Project management, 7 out of 10. Financial analysts, 9 out of 10 exposure. Market research, 9 out of 10. You see, the darker the red is, the higher is the quality of talent that we were always told it is. They're the highest paid people. Highest paid people, software developers, 9 out of 10. Again, guys, this is coming from Andrej Karpathy, not from me. I'm reading the report, right? Computer support specialist, blah, blah, blah. You can see this. ठीक है. But overall on a map, if you see, जहाँ green है, cooks, 3 out of 10. मैं संजोत से पूछना पड़ेगा, इंटर्न करना पड़ेगा मुझे. And now ये एक काफी इंटरेस्टिंग चीज है जो एजुकेशन है. So you can see this. कौन सा एजुकेशन कितना इफेक्ट हो रहा है. हाँ. Basis of that also is there. No degree, doctorate, which channels are they falling in? So that is the breakdown here as well. And the same way, monthly median pay क्या है उनका जिनका impact हो रहा है. Again, you'll see there's an indirect correlation. Higher paid people have a higher chance of impact. ठीक है. Now, when I saw this report, Nauraj, I was like, यार इंडिया के लिए किसी ने बनाया नहीं. कि इंडिया में कौन सी जॉब्स हैं, क्या है, कैसे. तो हमने थोड़ा रिसर्च किया और हमने खुद का इंडिया जॉब मार्केट विजुअलाइजर बनाया. Right? What is India job market visualizer? Well, it's the same thing. It's the same thing. Okay. Same thesis, but for India. By the way, yeah, I want to make this clear. This is what I mean by building. Right? I built this like 3 hours before we started. How did I build it? I went to Perplexity Computer. हाँ. I just said this is Andrej Karpathy's report. Okay. Look at this. This is the world that we are living in. Report ये है. This is Karpathy's job thing. You can go check it out. What I want you to do is I want you to do extensive research of data of India that is available and build a very similar exposure dashboard with data of India. Because I don't have to do all of this because the hard work is already done by Karpathy. He has spoken about thesis, कैसे research किया. अभी मुझे क्या करना होता? Task. What is the task in this? Figure out all the things that Karpathy did. What are the similar report? Crunch the data, visualize the data. But what was the purpose here? What does this data mean? This is the outcome. As long as I know what the outcome is, I can build it. And that's what I said in a single prompt, right? It was told actually 1 hour before, and we have the report ready. Okay. Which basically talks about 127 occupation groups in India. And the same thing, where our exposure actually is 616 million workers, but in high exposure, it's 42.6 million, which is 6.9%. Why? क्यों? ब्लू कॉलर व्हाइट कॉलर स्प्लिट क्या है इंडिया का? 2 करोड़ लोग बोले, ये 4 करोड़ बोल रहा है. The tax paying. Now, if you look at 2 graphs next to each other, right? Yeah.
यूएस का पूरा लाल था, ऑलमोस्ट रेड है, Yeah. राइट, बट इंडिया का दिस इज व्हाट वाज Hmm. तो okay, 143 million उधर, 616 million उधर. more people Hmm. who do work on a everyday level, हाँ. but exposure जो है इंडिया में 42.6 मिलियन पीपल का है, उधर 34.1 मिलियन का है, नेगेटिव आउटलुक, राइट, बट ठीक है, सॉरी, हाँ, यहाँ एक्सपोजर नहीं बोला है, काउंट यहाँ डॉलर वैल्यू में डाला है, बट ठीक है, व्हाट आई वांट टू लुक एट इट फ्रॉम हियर इज इंडिया लुक्स ऑल ग्रीन. क्योंकि मेजोरिटी जो लोग Look at this. Crop growers, which is agriculture. एनिमल प्रोड्यूसर्स, Shop sales people, all okay. Animal producers, all okay. अभी सारी छोटी लो कॉस्ट जॉब्स रहेंगी. इंडिया में मेजरली वो है ना, ब्लू कॉलर इज 80%. नाउ दीज आर ऑल अपना व्हाइट कॉलर, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स, Right. सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, नीचे रेड क्या है सबसे? कीबोर्ड ऑपरेटर्स, क्लरिकल सपोर्ट लाइक बैंकिंग, सेक्रेटरीज. सो अगर हम लोग एक स्टेप पीछे जाके देखेंगे ना, इट लुक्स लाइक इंडिया ऑल ग्रीन, ऑल गुड, बट द पार्ट्स दैट आर रेड. जो 2 करोड़ लोग 17 करोड़ टैक्स भर रहे हैं वो लोग बिकते हैं. yes, yes. दैट इज द प्रॉब्लम. But I think हमारे government- 100 करोड़ की प्रॉब्लम नहीं है, हमारी जो 2 करोड़ जिसके ऊपर कंट्री में प्रोग्रेस हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को फ्रीबीज बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से एक्चुअली चीजें बढ़ रही है, जो टैक्स कलेक्शन है, वो लोगों की नौकरी जाएगी. करेक्ट. वो लोग का एक्सपोजर बहुत ज्यादा है. That's what we are saying. Now this is cool. What we'll do is we'll link this up for people to play with it. अगर किसी को तो एक देखना काम होगा, करते हैं, अगर किसी को भी देखना हो कि इंडिया में कौन कौन सी जॉब्स हैं जो एआई की वजह से जा सकती है या जिस पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, ये वाला चार्ट हम सबके लिए डाल देंगे, नीचे लिंक डाल देंगे, देन पीपल कैन जस्ट क्लिक इट एंड डाउनलोड. done. So yeah, that is तो जिसको where, देखना है जाके अभी क्लिक करके they'll watch it. yes. So that is where we are with job exposure. I don't think anybody has done it outside. Interesting. Okay. Here's the thing. So last time जब तूने बोला था मुझे कि जॉब्स, जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए अपन ये एपिसोड बनाएंगे. So I went out and asked everybody. So एम्प्लॉयज ने सबने एक सेट ऑफ प्रॉब्लम्स और क्वेश्चंस दे दिए Okay. जो उनको है. अब वो प्रॉब्लम्स उनकी हो सकता है उनकी लाइफ में है, उनकी प्रोफेशनल लाइफ में, उनको मुझसे प्रॉब्लम है वो हो सकता है, या उनको उनके जो पर्टिकुलर बॉस या मैनेजर है उससे हो सकती है. आई डोंट नो, ये जनरल है जो मेरे पास आई है. व्हाट आर द थिंग्स? तो मैं एक एक करके पूछूंगा, बिकॉज शायद यही सारी प्रॉब्लम्स होगी जो मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज को अपने करियर में, अपनी जॉब्स में होंगी. Okay. And then one by one we'll try to solve it. And then we'll make it generalized later. Okay. You want to do generalized first and then specific, or do you want to do specific first and generalized? Go with the flow. I don't know. I don't even know what these are. I'm a little concerned now. Okay. So here's thing कि first is कि अगर आपका बॉस आपको माइक्रो मैनेज कर रहा है, Okay. okay, how can you use AI to show progress and reduce constant check-ins? Wow. Who is this boss? I don't know. Well, मैं माइक्रो मैनेज नहीं करता, so sure. actually I don't. I'm sure this is not fun. मेरे लिए ऐसा होगा कि मेरा बॉस केयर ही नहीं करता तो उसको केयर कैसे करवाऊं. That's it. My problem is other problem. Okay. Okay. यार मुझे अगर ये प्रॉब्लम होगा ना, अगर if there is a very shrewd manager who's trying to micromanage everything, the problem with micromanagement is that हमको उनको updates देना पड़ता रहता है, right? I will basically vibe code a dashboard, a live dashboard of progress. अभी जैसे मैंने बनाया था ना Perplexity कंप्यूटर, एक बना के दिखा ना, तो एक टास्क बता देन. ऐसा कुछ कि जो डेली मैं काम कर रहा हूँ वो एंड ऑफ द डे रिपोर्ट मैनेजर के पास चले जाए, ताकि वो मेरे से पूछे नहीं कि आज क्या हुआ, कितना काम किया, कैसे किया, ऑल दैट स्टफ. बिकॉज हियर्स अ प्रॉब्लम व्हिच आई थिंक इट्स अ गुड प्रॉब्लम. बहुत लोगों को लगता है कि ऑफिस में अगर तुम 10-12 घंटे बैठे नहीं हो तो तुम काम नहीं कर रहे हो, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. और अनफॉर्चुनेटली बहुत लोग ऐसे बॉसेस के सामने हैं. सो I'll tell you what I'll do. if they're doing something, they should give daily progress report. First of all, I think if your boss expects that, you should get the hell out of that job. Okay, world is too short. अगर आपको वो इफेक्ट कर रहा है, मतलब आप एफर्ट डाल रहे हो फिर भी ये हो रहा है, so you will find a better place. But जो तूने बोला उसका मैं एक टेक सॉल्यूशन देता हूँ. ठीक है, एंड ऑफ द डे रिपोर्ट बनाने का. एंड ऑफ द डे रिपोर्ट बनाने का. रिपोर्ट बनाने के लिए क्या चाहिए? Someone has to keep seeing what you're working on, right? So I would go to something like Omi Desktop. Okay, Omi Desktop. what Omi Desktop is, it's an app. Okay,
It's an app which you can download on your computer. Mac OS में है, Windows में भी होगा शायद, ओपन सोर्स है. ओके, ये करता क्या है ना, अभी मैं डाउनलोड करके नहीं रखूंगा, बट ये करता क्या मैं बताता हूँ. It look at the screen. It basically scans everything that you're doing on the whole day level. ये बना इसीलिए है कि तू कुछ काम कर रहा था और तू भूल गया क्या कर रहा था, या कुछ तो वेबसाइट देखा था एंड यूर लूजिंग कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट. यू वांट टू रिमाइंड योरसेल्फ कि यार 3 घंटे पहले मैं कुछ तो पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें राज कुछ तो बोल रहा था, वो क्या बोल रहा था मुझे याद दिलाओ. सो ओमी डेस्कटॉप इज क्रिएटेड to capture everything that you're doing on your computer 24 hours and makes that into your memory, ताकि तू क्वेश्चन पूछ सकते मैं क्या कर रहा था तब, मैं किससे मैं स्लैक में किसी को तो मैसेज भेजा ये रिपोर्ट बना करके, किसको भेजा मुझे याद नहीं है, ओमी प्लीज रिमाइंड मी. सो इट विल रिमाइंड यू. मैं क्या करूंगा, ओमी डेस्कटॉप इंस्टॉल करूंगा, ठीक है, और ओमी को बोलूंगा भाई आज का पूरा काम हो गया, आज मैंने क्या क्या किया है एक डॉक्यूमेंट बना के दे दे. Nice. इट वॉज नॉट मेड फॉर योर बॉस, इट वॉज मेड फॉर यू. Nice. But you're using it for your boss. Nice. Pretty interesting. Yeah. Nice. और तू करता है ये क्या ऐसे अपने लिए, खुद के लिए? नहीं. No. Don't need. No. भूलने की बीमारी I'll tell you. नहीं, भूलने की बीमारी बहुत ज्यादा है, बट मेरा थोड़ा ऑप्टिमाइज हो चुका है. The reason is inside of Codex there's a similar feature जहां मैं बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ टू बिल्ड प्रोडक्ट्स, चैट जीपीटी ये सब जो होता है ना, वो कोडेक्स के अंदर एक फीचर है जो मेरा स्क्रीन देखता रहता है टू अंडरस्टैंड कॉन्टेक्स्ट. सो कोडेक्स का जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें रहता है, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. आई यूज कॉमेट ब्राउजर. कॉमेट ब्राउजर में अगर मैं कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल आई कैन जस्ट से hey, could you open that website which had data for jobs and impact of all of it? I was checking that tab sometime back. I can't remember what that is. Instead of Comet, I could just drop it something like this. वो Comet के अंदर मेरा जॉब का, मेरा ब्राउजर का हिस्ट्री है. So it will understand what I'm talking about and it will open that tab back for me. देख ले खुल गया. Nice. All automatically. So I do this in micro instances. Instead of 24 hours. Instead of 24 hours, because मुझे पता है information कैसे निकालना है. So for me, I don't need a extra app of Omi Desktop per se. Got it. But someone who's using multiple apps, मेरा सारा काम Chrome में होता है, तो Comet, सारा काम ब्राउजर में होता है. So Comet is doing that work for me already. Comet is by the way really good. Yeah. And I've started using it from our day one. Yeah. तब से मैं change it. It's real. Like I can't go back to any other normal browser. It is hard. ChatGPT Atlas is also very good. जो भी AI ब्राउजर है, मैंने ट्राई किया एटलस, मुझे बहुत अच्छा लगा. अभी बहुत अच्छा हो चुका है. Anthropic is bigger than ChatGPT. Yeah, they're saying $60 billion in revenue right now. They're growing like wildfire. But जब OpenAI dropped GPT 5.5, I was a huge Claude buff, huge Anthropic buff, because मैं बहुत disappoint हो गया इन अ वे OpenAI से. क्या कर रहे हो भाई? Why are you not shipping? But Codex GPT 5.5 drop हुआ. I've stopped using Claude completely. I've moved completely to Codex. In fact, अगर Codex करना है अपने को 3 घंटा लगेगा, just Codex. I've stopped using ChatGPT. I've stopped using Claude. I just use Codex. Codex क्या? Codex एक ऐप है which is designed for developers to build products. But उन्होंने क्या किया है? Because it is built for developers, they have transitioned that into a everybody's app. What do you mean by that? So everybody can use it right now. Only developers के लिए, मतलब पहले क्या होता था Codex में, तो कुछ भी करेगा, it looks very developer centric, सादा कोड ये सब दिखता है. अभी उन्होंने MCPs भी डाल दिया, which is connectors, जो हमने प्ले किया था लास्ट टाइम. They've added their own version of skills. They've added their own version of agents. I don't know तूने एक ट्वीट देखा कि नहीं मेरा. I got Codex a job of building content OS, जो तेरे को मैंने दिखाया था glimpse, वो बना रहा हूँ मैं अभी भी, right? You know how I work with it? रात में बिफोर स्लीपिंग आई कम एंड आई से ओके व्हाट डिड वी अकम्प्लिश टुडे, ये सब हुआ, व्हाट आर द थिंग्स दैट आर नीडेड टू बी डन व्हिच विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. लॉट ऑफ टेक डेट होता है, डेटाबेस क्लीनअप्स होता है, माइग्रेशंस होता है, ये टेक्निकल डेट्स होता है, वो भी मैं भी अभी सीख रहा हूँ ये सब. आई एम लर्निंग टू बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर विदाउट राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड. नॉट दैट आई रोट कोड एनी टाइम बिफोर, बट आई थॉट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो देयर बी अ लॉट ऑफ टेक डेट. मैं बोलूंगा ये आज एग्जीक्यूट करना है. Don't stop till everything is done. You have access to everything. If you are getting stuck somewhere, you have access to my browser. If you are still stuck somewhere where you really need my help, you have access to Vapi. So you can make a phone call to me and I'll wake up if you're not able to move. But don't stop and run autonomously.
every night it runs for 8 to 9 hours without stopping. मैंने ये ट्वीट भी किया था, that screenshot and Greg Brockman has liked it and bunch of OpenAI people retweeted it and whatnot. 9 hours and AI GPT 5.5 in fast mode. Fast mode मतलब it works 2.5 times faster than regular AI. GPT 5.5 high basically is like the best AI coding model ever in the world, is running 8 hours all by itself. That's equivalent to, I believe, 10-15 software engineers का काम 15-20 दिन का हो रहा है overnight. Crazy. Bro, by next podcast, maybe Content OS will be ready. And I will show that. It's a personal app that I built for myself. I am so bloody surprised. I'm someone who cannot write code. I'm so bloody surprised कि यार ऐसे प्रोडक्ट मैं बना पा रहा हूं खुद से. इट इज ब्लडी कॉम्प्लेक्स, आई नो. उसके लिए मुझे वो एक प्रॉपर SaaS ऐप है, मतलब 15-20 लोग का टीम लगेगा, 6 महीना लगेगा बनाने के लिए ऐसे प्रोडक्ट को. Crazy. वो वीकेंड में 2-3 घंटा प्रॉम्प्ट करके भाई तू चला, एंड मल्टीपल एजेंट्स आर पैरेलली वर्किंग. इट्स इनसेन वेयर वी आर हेडिंग टुवर्ड्स. It's wild. मैं और एक चीज करता हूँ राज, जो काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है लोगों के लिए. यू नो, every ChatGPT and all of these have something called as instructions, right? My codex instruction, ये custom instruction जो होता है ना, this is तो okay, this is ChatGPT का instruction, some old one, छोड़ दो इसको. ऐसे ही codex में भी एक instruction होता है. वहां मैंने instruction क्या दिया है पता है मेरे कंप्यूटर में? I have said I don't know how to code. I'm not a software engineer. I am building because I like building. But I am also building because I want to learn and I want to know how to think like a software engineer. So when you are doing something, because ChatGPT Codex keeps telling you, I'm doing this next, I'm doing this next, but it talks in a technical language. So don't talk technical language. Talk in a language where I can understand what it is, but also tell me the technical word for that. So मैं जब वाइब कोड कर रहा हूँ, वो जब खुद का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, वो मुझे टेक्निकल लैंग्वेज भी दिखा रहा है और अ सिंपलर वे ऑफ एक्सप्लेनिंग मी लाइक I'm a 10-year-old भी कर रहा है. Nice. तो I'm not only building by getting AI to do it for me, but I'm also learning in that process. मतलब यार तू, why are you saying that you should first design the database before designing the front end? हमको तो प्रोडक्ट मतलब UI रहता है. AI मुझे बोला कि यार 80% वर्क इज इन द बैक एंड. I'm like, what do you mean by the back end? Explain. वो समझाता है फिर. डेटाबेस क्यों करना है? पहले UI क्यों नहीं कर सकते हैं? I think UI फर्स्ट करके मैंने बोला because I'm a visualizer. And said that is what differentiates you from a great software engineer. You have to think architecture first. वो पढ़ा रहा है, मुझे सिखा रहा है as I'm building a product. I'm getting better, 1% better every single day. So all these little things has nuance. And when you talk, when you explore things like this, in fact, why do you have to do this for only the questions that you don't understand? I तो fundamentally go and do this for everything. अगर कुछ भी आइडिया है, मैं जाके बात करता हूँ. I explore. Tell me what more can I do? Tell me what are the things that I'm not thinking through. Tell me why this will fail. Interesting. People should just keep talking. Yes. Like a lot. Yes. Tell me basic problem, because you're talking about basic problem. Another big basic problem of people is कि मीटिंग है, 20 मिनट बचे हैं मीटिंग में जाने में, पता नहीं क्या करना है. आज जाके वहाँ पे शायद कुछ प्रेजेंट करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा, कुछ बोलना पड़ेगा एटलीस्ट. ओके, प्रेजेंट बाद में आते हैं. जस्ट लाइक आई वांट टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द मीटिंग. मेरे पास लास्ट 15-20 मिनट पड़े, मैं AI यूज करके कैसे प्रिपेयर्ड जाऊँ मीटिंग के अंदर. एक एग्जाम्पल दे मीटिंग का. लेट्स से मीटिंग है अबाउट लास्ट मंथ क्लाइंट की ग्रोथ क्यों नहीं हुई. Okay. लेट्स से इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग है और तुम्हें डेटा प्रेजेंट करना और सब बताना और तुम भूल गए काम करना. I mean, भाई कर क्या रहा है तू जॉब में? I'm just making it very very No, I understand. basic job person like. हाँ. I mean, if I don't even have data, I don't know what to prepare. Right? That's a fundamental problem. मैं कुछ AI से यूज करके डेटा निकाल लूंगा ना सबका. So, तू बोला मुझे डेटा चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल. डेटा तो किसी का चाहिए. To use, let's say, social media case, you are a social media agency who does media for creators. Okay, and you have a bunch of creators. Now, I don't know if you know this. If you go to business.facebook.com, okay, there's something called as Creator Marketplace. ठीक है. I know this वैसे. हाँ. Creator Marketplace basically gives you data
of all the creators that you want. ये तू नहीं बताया था मुझे. Yes, but दुनिया को नहीं बताया था ना. So I don't know if मेरे अलावा दूसरे को बताओ. Okay, fine. बताओ और किसी का बता, नाम बता. कुछ भी कर दे. ठीक है भाई. मेरा मुझे सर्च है. पॉसिबली नहीं आएगा. तू तो आ गया. आ गया. Now what is crazy about this is that you can literally see the data of a creator जो only creator के पास था इससे पहले. Right? You can see the followers, you can see the reach, accounts engaged. This is reach, accounts reach, not impressions. Right? And not just that, these are insights that was only available to you as a creator. Demographics, countries, cities. 6% Everything. which is wild. Yeah, everything, right? This is actual data. I mean, you'll be like, हाँ तो ठीक है ना, क्या मतलब? For example, यहाँ वरुण दिख रहा है ना? Oh, is a friend, so we can open. It's fine, right? So I'm not Varun, right? But look at this. I can see all this data. 4.6 million people reached, right? The age, the demographics. Third biggest country for Varun is Pakistan. Yeah. For you also? Yeah. For me also? Same. I don't know. But you get the point, right? This is some insane data of a creator that is available to you. Of any creator for that matter. So the reason I'm showing you this is, okay, now that we have this data, what I can do is, let's say, so I will just take a, I don't know, full page screenshot. It's a extension that I have, which is called Go Full Page. जो खुद स्क्रॉल करेगा पूरा पेज को और ये स्क्रीनशॉट ले लेगा. Nice. Okay. Whatever data you have, I can download it as a PDF. It's called Go Full Page for people who are ठीक है. wondering. Full page का ये ले लिया इसने. हाँ ठीक. I'll go to a Claude or a ChatGPT or whatever. ठीक है. Dump it right inside. Hey, this is Instagram data of a client of mine who I'm helping with social media, and I have a call with him to have a conversation with him to talk about his progress in the last 30 days. I'm not prepared at all. But I've shared all the data with you about the creator. You have his name, and also you can happy to research about him as well. Do all the research and build me like a super extensive document of about full performance of the last 30 days with soft and hard data that you can find on the internet and from the screenshot and everywhere else around it, so that I can have a solid conversation with the client for 30 minutes, which will be insightful for the client as well. And towards the end, give me like 10 talking points that I should stress on and spend most of the time on, which could help my client grow faster and also position me like a super smart guy. I mean, pretty straightforward and simple stuff, right? No rocket science. But this is what orchestrating is. Being able to understand कहाँ से data निकालूं, क्या करूं, कहाँ डालूं, क्या पूछूं. That is basically what we need to do. और अब ये दे देगा. And then you just read this. Yeah, you just 15 minutes before the meeting. Yeah, you probably read it during the meeting. जब तक हाय हेलो हो रहा है, जब तक कोई बात कर रहा है, तब तक you do it. 10 टॉकिंग पॉइंट्स पूछा ना, मतलब इतना भी घटिया नहीं हो कि कभी देखे ही नहीं. बस तुमको 10 टॉकिंग पॉइंट्स चाहिए. हाई लेवल पॉइंट्स मिल गया तो तुम बात कर ही लोगे. Fair. Okay, another problem is if you want to automate repetitive tasks in your job, where should you start? Repetitive tasks. हाँ, कि बार बार हो रहे हैं वही टास्क, तो कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? Okay, if your tasks are on a computer and uses internet, then I feel the simplest platform for you to build, you have to build an AI agent इसके लिए. The simplest platform for you to build AI agent is called as Zapier. You have heard about it. बहुत लोग सुने होंगे Zapier के बारे में. But Zapier का एक नया प्रोडक्ट है Zapier Agents. Okay. This is Zapier Agents. इसका एडवांटेज क्या है ना? This is text to agent. मैं बस बोलूंगा कि मुझे ये ऑटोमेट करना है और ये ऑटोमेट कर देता है, and it works in Symphony. For example, I'll give you 2 solutions. Tell me what you're trying to automate. Daily trending news to build content pillars on. It's a very repetitive thing that somebody has to do in my team. Daily trending news related to our domain. And then giving that as a piece of, let's say, usable dialogue or usable note for me to build content on. Great. I like this idea. Okay. This is a very simple agent actually, and we should build it. Now, daily trending news कहाँ आता है? Step number 1 कहाँ आता है? Google News पे. Correct. So I need a way
to pull the news from Google News. And तेरा कुछ topics होगा, हाँ. ये topic है, वो topic है. Let's say you create content on politics. I don't know, just making it I up. don't, but okay. Just making it हाँ, up, ठीक है. right? या politics हाँ. है. So you want to be sure that Indian politics का जो भी content आ रहा है on internet, you are able to, your AI is able to read through it हाँ. and is able to do this. So you need a platform for that. What is that platform? So for this, a good platform is Feedly.com. Feedly is a platform which aggregates all the news. It's a news reader. I know. It aggregates all the news. हाँ. Now, Feedly also has an AI extension. Okay. So what I can do is, and I know it's on Zapier. So usually जब अपने को automate कुछ भी करना होता है ना, then हम लोग यही देखते हैं कि यार ये tools में है कि नहीं. ठीक है. Feedly is a platform जहाँ न्यूज एग्रीगेट होता है. सो माय फर्स्ट स्टेप व्हाट आई विल डू इज आई विल से Feedly Zapier. मतलब Zapier में इंटीग्रेशन है कि नहीं है. ओके ग्रेट, राइट. सो मुझे अभी एक एजेंट बनाना है और ये रिपोर्ट मुझे लेट्स से अपने ईमेल में चाहिए एवरी डे. सो व्हाट आई कैन से इज आई कैन कम हियर व्हिच इज वी आर ऑन Zapier एजेंट्स फर्स्ट स्पॉट एंड आई विल बी लाइक what I want you to do is I want a news aggregation on Indian politics every single day. I'm a creator who creates content on politics every day morning at 9 a.m. on everything that happened over the course of last 24 hours. I want you to pull all the critical news that has happened in the last 24 hours on Indian politics from Feedly by using the right keywords. And as you get that information, I want an AI to be able to go through all that information, cut out noise, put things that matters, and make a list of 5 news articles or 5 summarized points of each one of them in form of a paragraph, and send all of that information to me on my email exactly at 8:30 a.m. Okay. So over the course of last 24 hours, you aggregate the information, find the top 5 pieces, put them all together, send me an email, and that is the agent that I want you to build. That's it. हो गया. I've explained what I want. I'll click on create agent. You know what Zapier agent will do? It will automatically look for the connector. Ideally, it should be able to find Feedly. It should be able to build that layer of AI in the middle. It should be able to build the layer of Gmail also. सब ये खुद कर ले. सब ये खुद कर लेगा. तेरे को जाके login करना है Hackit में. That's it. It's a look at this. It has started to ask me connect your Gmail account because so I have to go here, connect a new account. But you get the idea. Yeah. Yeah. So that is what it does. And then ये बना के मेरे को email भेज देगा. हाँ, so once the whole thing is done, what you will see is this is the flow. You have built the flow right now. Right? So now it's asking, set up this tool, set up this. In fact, ये क्या किया देख, it has a web search tool. So it picked that up directly. And ये जो knowledge source है ना, इधर तू ये mention कर सकता है कि these are the kind of content that I create. These are 10 topics that have gone viral. These are 10 topics that have not gone viral. You can put that information to make it better. And that's it. Your agent will be built. Nice. You just have to publish it and your agent will be built. It's the simplest way to get started to build very, very simple agents. And of course, right? यहाँ तू क्या कर सकता है ये देख. उसने किया क्या पता है? Everything that we mentioned, right? It converted all of that into a prompt. That's all it did. And it connected tools and it gave it tool access. That's it. Can I do something like this for the newsletters that I really like? Yeah. So there are like bunch of newsletters. वो 15 दिन में एक बार आते हैं, 10 दिन में एक बार आते हैं मेरे ईमेल पे किसी दूसरे रैंडम इंसान के. मैं चाहता हूँ कि रोज आए वो उस टाइप का कुछ कंटेंट. मतलब मान ले मैंने वैभव को सब्सक्राइब कर रखा है. वैभव मुझे वंस अ वीक भेजता है. ठीक है. आई रियली लाइक दैट न्यूज लेटर. आई वांट कि वैसा कुछ न्यूज लेटर बन के मेरे पास डेली आए. Absolutely. Absolutely. I can just tell him, give him knowledge center example. थोड़ा इससे बेटर करना पड़ेगा. I'll tell you how I would go about it. I'll tell you the problem state. I'll tell you how I'll solve this problem. Pen paper. अच्छा कहाँ लिखूं? हाँ देख. Problem number 1 क्या है?